इंडिया से रिमोटली यूएस के क्लाइंट के लिए काम करने वाला मेरा एक दोस्त बहुत खुश है क्योंकि $1 की वैल्यू अब बढ़कर 82 रुपीज जो हो गई है। यानी उसके बिना कुछ किए उसे मिलने वाले पैसों में तगड़ी इंक्रीमेंट। ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडिया के कई सारे सेक्टर्स में। इन सारे सेक्टर्स में कौन से सेक्टर फायदे में है और कौन से सेक्टर नुकसान झेलेंगे, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। In the last 1 year, INR has depreciated by roughly 10%, whereas other major currencies such as the pound, euro and yen have fared much worse. India's current account deficit widened to a whopping $23.9 billion in the second quarter of 2022, highest ever in a decade. Current account deficit can simply be understood as the gap between imports and exports. To sum it up, India is importing more than it exports. एक बात तो पक्की है, rupee depreciation is definitely not good news for Indian markets. Telecom sector. Telecommunication companies spend roughly $6 billion every year on importing network gear. This impact is likely to be partially offset as telcos also make purchases in euros and pounds, both of which have depreciated against the rupee of late. Rupee fall versus the US dollar shall hike the total interest outgo on the dollar debt. As per some estimates, a weaker rupee could push the capital expenditure bill by 5% in financial year 2023. Oil and gas sector. Oil and gas is one sector that has been bleeding profusely on account of the rupee depreciation. India imports over 85% of its oil requirements and around half of the gas it consumes. यदि companies ये cost hikes customers को नहीं pass on कर पाते हैं, then margins can come under pressure. हम segment wise divide करके देखें तो crude importers जैसे कि HPCL, BPCL, IOC as well as gas importers जैसे कि GAIL को रुपए की depreciation भारी पड़ने वाली है, especially given that retail prices of petrol and diesel remain on freeze since November 2021. वही crude exporters जैसे वेदांता, ONGC, Oil India के लिए this might be slightly positive news, but given the windfall tax imposition, any extraordinary gains are likely to be capped. Banking sector. You will be surprised to know that despite having a direct relationship with money and currency, the banking sector would remain virtually unaffected by the depreciating rupee. जी हाँ, बैंक्स पर रुपी डिप्रिसिएशन का कोई खास इंपैक्ट नहीं रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक्स की मोस्ट फंडिंग लोकल करेंसीज में रहती है। फॉरेन करेंसी साइड पर भी जनरली एसेट्स और लायबिलिटीज हेज रहते हैं, unless the bank decides to take a specific exposure. Textile sector. India's sizable textile exports to the US market makes this sector a net gainer. But focus इस टाइम पर डिमांड साइड पे ज्यादा होनी चाहिए, given the recent slowdown from US and European Union. जिन कंपनीज की ज्यादा डिमांड होगी उनको उतना ही फायदा होगा। फार्मा सेक्टर. Speaking in general, rupee depreciation is a positive for the pharma industry as it remains a net exporter. But यहाँ पर और भी कई सारे कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी कौन कौन से सेगमेंट्स में डील करती है, उनकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वगैरह वगैरह। रॉ मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे मॉनिटर करना चाहिए। आपकी नजर उन ड्रग कंपनीज पर होनी चाहिए जो उस मार्केट में लार्ज फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स करते हो। ओवरऑल अ मिक्स्ड बैग। ऑटो सेक्टर. ज्यादातर ऑटो कंपनीज एंसिलरी पार्ट्स को चाइना, जापान और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। Imports will be expensive, but that shall be compensated by the rising cost of finished vehicles. However, Indian component exporters also stand to gain. As a matter of fact, the components industry rented a trade surplus of $700 million for the very first time in financial year 21-22, with exports increasing 43% to a record $19 billion. Once again, sector outlook remains neutral. FMCG sector. FMCG कंपनीज के इनपुट कॉस्ट का नियरली 50% हिस्सा जाता है क्रूड और पाम ऑयल डेरिवेटिव्स पर। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉस्मेटिक्स, वॉचेस, अपैरल्स कैन गेट कॉस्टलियर. इट इज लाइकली दैट प्रीमियम सेगमेंट रिमेन्स इंसुलेटेड. वंस अगेन, द एग्जैक्ट मार्जिन इंपैक्ट विल डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू पास ऑन द इंक्रीज्ड कॉस्ट. आईटी सेक्टर. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर. रुपए की डिप्रिसिएशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट यदि कोई एक सेक्टर को होगा तो वो है आईटी. द इंडियन आईटी सेक्टर इज प्रीडोमिनेंटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन नेचर. ये कंपनीज अपने ज्यादातर क्लाइंट्स की बिलिंग्स भी यूएस डॉलर्स में ही करते हैं. इंडियन आईटी कंपनीज के टोटल रेवेन्यूज का लगभग 50 to 60% हिस्सा यूएस से आता है. एज पर सम रीजन स्टडीज, a 1% fall in the value of rupee improves the operating margins of IT service providers by roughly 30 to 40%. In the past 1 year, the Nifty IT index is already down by more than 20%. Is this a good opportunity to buy the dip? Only time will tell. Indian IT stocks तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं. But if you want to know which was the best large cap IT stock, watch this video here.